से हमने निकाल लिया. Very good. So done. Write down another question on screen now. Tell me when you're finished, please. Noted, sir. Okay. So this question does not involve the two formulas that we are talking about so far. This requires another kind of approach. Steaming error of a gyro sailing on equator is 2 degrees. Latitude is 0. Course not known. Speed not known. If the same course and speed is being done at another latitude, 36 degrees 52 minutes, maybe south or maybe north, that hemisphere also not given. So how much will be the error? Here it is steaming error. Remember, it is steaming error. Since it is on equator, so damping error 0 hoega, that we know. Because either gyro compass damped in tilt or azimuth, on equator, the damping error is nil. It is pointing due north all the time. So what happens? As we have already seen, that because of the motion of the earth and the motion of the ship combined together, we get a resultant motion, जो कि हम r से represent कर रहे थे अभी तक, और इसके perpendicular the spin axis is settling on a meridian which is false, not correct. Either it is slightly to the west or to the east depending on the course. So this is the normal case. Now supposing the shape is okay, let us say on earth somewhere, nahi zyada bada ban gaya. On earth somewhere, the ship is here. Will the gyro star be in this direction? Red pointer की तरफ. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, we'll come to that.
I have already got a diagram, so we'll show it in the diagram. So this false meridian का जो हमने केस देखा था, that was only if the ship was doing anything southerly or northerly, that the resultant used to be above or below the 900 or Earth's vector. So this was the only case when it was happening on 090 due east and 270 due west. This problem was not there because we only added or subtracted with Earth's vector. अगर अर्थ वेक्टर ये है तो ईस्टर्ली कोर्स में ऐड करते हैं, वेस्टर्ली कोर्स में माइनस करते हैं, बस इतना होता था. बट एनीथिंग नॉर्थ और एनीथिंग साउथ, the resultant used to change. So these are the two conditions in which there is no steaming error, due east and due west. If there is north or south component of the ship's movement, then the ship's motion itself, the speed at which she is doing, she is steaming, that also creates a false tilt or tilting effect. Not only the Earth's motion, but when the ship is sailing, because of her course, northerly or southerly component of the course causes another tilt. Think of a tree. Imagine कीजिए कि आप एक पेड़ के से थोड़ी दूर खड़े हैं, 100 मीटर दूर खड़े हैं, और पेड़ के ऊपर में एक फल लटका हुआ है. मैंगो का सीजन है, आम का सीजन है, आम का फल लटका हुआ है. अब आप पेड़ की तरफ बढ़ रहे हैं while looking at the mango. As you're coming close to the tree, क्या आपकी गर्दन धीरे धीरे ऊपर हो रही है? Yes, sir. हो रही है. जब पेड़ के नीचे आ जाएंगे तो एकदम ऊपर देखना पड़ेगा आपको. Yes, sir. Okay, so that is what we are trying to say, that when the ship is at this place, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं. When the ship is at this place, it is looking at the mango here, which is the gyro star. Because the ship is moving towards the gyro star, meanwhile always looking at the gyro star. Remember rigidity in space. So when she has moved little bit, here she is still trying to look like this in the same direction, but the horizon has changed like this. That means ship का गर्दन ऊपर हो गया, spin axis का गर्दन ऊपर हुआ या नहीं? Yes, sir. That means this is tilting. Yes, The sir. spin axis is beginning to tilt. It is lifted above the ground. The spin axis has lifted above the ground. Yes. And this is because of the northerly motion of the ship. So tilting and drifting, which we had seen earlier, which was only due to Earth's motion, can be compounded by the ship's motion also, only when there is southerly or northerly component of the motion of the ship.
So the gyro star seems to go up, and with that the spin axis also seems to go up. यहां पे आएंगे तो spin axis will be something like this. ये horizontal से इतना ऊपर हो गया हो. So what we said is that the motion of the ship, if there is a southerly or northerly component, there is also some tilting being experienced by the spin axis due to the motion of the ship. So what will be the rate of tilting? The ship speed we are taking in nautical miles per hour. So that will be the north-south component at what rate the ship is moving per hour के rate में. The tilting will be can be directly equated with the speed of the ship. Tilting per minute, minutes per hour, number of degrees or fraction of degrees, that is minutes per hour, is due to the north-south component. Yes, sir. Ship is doing, let us say, 20 knots per hour. The 20 knots basically is 20 minutes. Each mile is a minute. Yes. So 20 minutes per hour के rate पे tilting होगी. So that is what we are saying. Tilting minutes per hour, because minutes are knots, nautical miles. That means tilting which is happening minute per hour, ऊपर वाली लाल वाली चीज ही नीचे लिखी हुई है, is equal to V cos course. V cos course is the northerly southerly component of the ship's motion, cos course. If the course was 0 0 0, cos 0 is equal to maximum, तो maximum V से ऊपर की तरफ जाएगा. अगर कोर्स 0 0 0 है तो मैक्सिमम टिल्टिंग होगी. जैसे जैसे कोर्स कम होएगा और 90 तक आएगा, 90 पे cos 90 is equal to 0, so northerly southerly component will become 0. So V cos course से we are finding out the component of northerly direction or southerly direction. So the apparent tilting which is happening is because of the ship's motion, in which there is either northerly or southerly component. So that tilting because of the motion of the ship now can be equated with the tilting that we had already seen, which is 900 cos lat sin azimuth. 15 डिग्रीज हमने किया था, तो 15 डिग्रीज को हमने 900 में कन्वर्ट कर दिया. 15 into 60 is 900. So equating these two together, we go further and we have sin azimuth is equal to V cos course by 900 cos lat. You can also note down.
In this case, this azimuth is the steaming error. So from here, what we have is basically sin SE is equal to V cos force by 900 cos lat. एक स्टेप आगे और देखेंगे. Normally, the errors that we are seeing was 1 degree, 1.5 degrees, like this. So sin azimuth in degrees can directly be taken as the same value as the degrees azimuth error. What do we mean to say? For example, since the azimuth error or SE is, let us say, 1 degree. So can you please tell me what is the value of sine 1 degree? Please calculate and tell me. Let us say that a steaming error is 1 degree. So 0.0174. 0.017. Yes. Okay. So that is in radians. 0.0 something that you have said is the angle in radians, the azimuth error in radians. Now convert this 0.01 something that has come into degrees. Converting radians into degrees, multiply it by 57.3. 1 radian is equal to 57.3 degrees. 0.97. Come again. So 0.97. 0.97. So did we see that sine 1 So degree? So it's coming 1.00020002. Ultimately, what we are trying to say कि जो sine 1 degree था, when the value of degrees are very small, which is SE basically steaming error, तो हमें SE in radians मिल गया या नहीं? ये सर सेम हो जाएगा दोनों, क्योंकि 1 डिग्री का रेडियन में 1 ही आ रहा है. एग्जैक्टली. तो रेडियन में वही बराबर होती है. अगर रेडियंस में इक्वल करें तो द वैल्यू ऑफ साइन एजिमथ इज इक्वल टू जितना रेडियंस आता है उसको कन्वर्ट करेंगे तो इट इज कमिंग बैक टू द सेम 1 डिग्री वैल्यू. दैट मीन्स हम लोग डायरेक्टली ले सकते हैं SE जो हमने यहाँ पीछे देखा था, ये जो देखा था साइन एजिमथ, हम इसमें से साइन हटा सकते हैं और वी कैन डायरेक्टली राइट azimuth is equal to V cos force by 900 cos lat. That means SE is equal to V cos force by 900 cos lat. ये सिर्फ इस केस में होगा ना जहाँ पे बहुत स्टीमिंग एरर इज अराउंड 1 डिग्री. Steaming error mostly is very less only because Earth's motion is 900, ship motion is 15, 14, 13, 18 knots. So the kind of component included or introduced by the ship's motion is very, very minimal. So it always remains between 1-2 degrees or so. Of course, if we are going to the poles, let us say 089 degrees पे अगर हम steam कर रहे हैं तो वहां 900 की वैल्यू कम हो जाएगी. 900 cos latitude, 900 cos
89 डिग्रीज, तो वो बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी। शिप का 20 नॉट्स स्पीड विल बिकम सिग्निफिकेंट, तो वहां ज्यादा बढ़ जाएगा। हाँ तो सर बट इन ये इस नॉर्मल केस में वी कैन साइन हटा के सिर्फ अजीमत ले लेंगे फिर। एग्जैक्टली वो आगे आएगा इस केस में, देखिए। ओके, तो इस केस में अगर देखा जाए तो azimuth error in radians, साइन हटा दिया हमने, इज इक्वल टू v cos course बाय 900 cos lat। बट हम रेडियंस यूज तो नहीं करते हैं, अगर स्टीमिंग एरर बताना हो तो इतना रेडियंस तो हम बताएंगे नहीं, सो वी मस्ट कन्वर्ट इट बैक इनटू डिग्रीज। तो डिग्रीज को LHS में और RHS में दोनों तरफ करना चाहिए। So in order to do that, azimuth error in degrees, we have introduced pi 180 by pi, that's the value of 1 radian। हमने इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया 57.3, which is basically 180 degrees by pi radians, और वही यहां पे भी कर दिया। सो अभी जो आपने निकाला था 0.01 समथिंग इतना रेडियन, उसको डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए आपने 57.3 से मल्टीप्लाई किया था। हमने इधर भी किया और इधर भी कर दिया, दोनों तरफ LHS RHS बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाय 57.3। बट नाउ azimuth का वैल्यू वी हैव इन डिग्रीज। इज इट मेकिंग सेंस सो फार? यस सर। और डिड यू मिस इट? ये क्या हो गया, कैसे हो ये गया? एजीमथ एरर इन डिग्रीज के लिए तो एजीमथ के साथ मल्टीप्लाई हम लोगों ने 57.3 करेंगे और उधर 180 बाई पाई। तो 180 बाई पाई कीजिए, क्या है, व्हाट इज 180 बाई पाई? प्लीज डिवाइड एंड टेल मी पाई का वो तो वैल्यू। वही होगा सर, 27.3 आएगा सर। 27 नहीं, 57.3। 57.3 हाँ सर। तो दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई कर दिया ना। यहाँ पे जो हमने किया था 1 डिग्री था, और रेडियंस की वैल्यू जो थी वो 0.0, अभी आपने कैलकुलेट किया था ना साइन 1 डिग्री, 0.01 समथिंग समथिंग, यस सर। इतना रेडियन था, मल्टीप्लाइड बाय 57.3 किया हमने। तो दिस हाँ गिव जी अस, सर। और यहाँ पे भी हमने पाई सॉरी 180 बाई पाई कर दिया। कहाँ गया यार, 180 बाई पाई किया। So this side also we have multiplied by the same value. यस सर। हमने यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया 57.3 से, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया 57.3 से। LHS RHS को इक्वल वैल्यू से मल्टीप्लाई किया है, तो दोनों नेट वैल्यू तो वही रह गई। इक्वेशन बैलेंस्ड है ना अभी तक? यस सर। So break it up little bit more. (900 and 180 degree), they are 5 times of each other's. So we have got 5 pi cos lat. Azimuth error or steaming error in degrees equal to V cos course by 5 pi cos lat. Take a look, work with yourself, talk to yourself, and satisfy yourself. Yes, it is okay. Or if not, please do talk to me again.
Tell me when you are good. Yes. Okay. It is clear. What we have done here is 180 और 900 को आपस में इक्वेट कर दिया, which is 5. 1895. So somebody tell me, this azimuth error, steaming error, is it in degrees or radians? Sir, degree. Very good. Degrees, क्योंकि ऑलरेडी इक्वेट कर दिया ना हमने, ऑलरेडी इसके ऊपर वाले में यहाँ पे हमने इक्वेट कर दिया 57 और 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दिया लेफ्ट हैंड साइड को भी, और वही 180 बाई पाई राइट साइड में मल्टीप्लाई कर दिया. So now it is in degrees. So we can have the value of steaming error directly by using this formula as well. But big disclaimer, this is holding good for latitudes up to 60-65 degrees only. सिक्सटी 65 डिग्रीज के लैटिट्यूड तक तो ही हम अप्लाई कर सकते हैं इसको, बट उसके बाद 900 cos lat की वैल्यूज जो है वो कम होने लगती है विथ रेस्पेक्ट टू शिप्स मोशन. अगर हम लोअर लैटिट्यूड्स में है तो 900 cos lat इतना होगा और शिप का वैल्यू इतना होगा. बट एज वी गो अप इन द लैटिट्यूड, the 900 cos lat will become this and the ship will become this. So see the error that it is going to cause. As we go up in the latitude, peripheral motion of the ship, Earth is getting less and less. 900 cos latitude. As we go towards 90 degree cos 90, it becomes 0. So this formula will be holding good only for latitudes up to, let us say, maximum 65 degrees. And you are going to get asked questions which is on the similar basis. You won't be getting this kind of situation for 85 degrees of latitude. So now, should we come back to the question that we started off with? What was the question asking? What was the question? So steaming error of gyro sailing on equator is 2 degree, allowing for the same speed and course. What will be the steaming error in latitude 36 degree 52 minutes? Okay, so 36 पे पूछा है, आपको 86 पे नहीं पूछा है. देख लिया आपने, यहाँ पे भी दिख रहा है कम से कम कि लोअर लैटिट्यूड्स पे lower latitude. Okay, so now take a look at this and verify yourself that it is all okay or not. सर आंसर कितना है? 0.16 डिग्री. Come again? Answer? यस सर. वो तो पता करेंगे तब ना, अभी आगे आने दो, मुझको थोड़ा याद है क्या है, या तो स्क्रीन पे देखूंगा नहीं तो कैलकुलेट करूंगा. चलो मैं भी आगे आगे दौड़ लेता हूँ आपके साथ थोड़ा सा. लो ये है आंसर. So what we have done here is 2 degree SE we have already been given. V cos course by 5 pi cos latitude on equator, so 0 degree. So हमें V cos course की वैल्यू मिल गई, यहां से मिली या नहीं? V cos course Yes, is equal to 10 pi. Okay. Yes. अब अगले सिचुएशन में फिर से SE
वही v cos course by 5 pi cos latitude इस time 36 degrees 52 minutes is there. So v cos course की जगह हमने 10 pi की वैल्यू रख दी उसकी जो निकाला था ऊपर में, divided by 5 pi cos 36 degrees 52 minutes. So here is the answer. So if you know the concept, it is one step solution to this. It might look very complicated कि ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या करना है. But if you have the concept, if you know the formula and the concept behind the formula, then it becomes easy. So tell me if you are happy with this question now and you can handle it. So Sir, okay, everyone, come again. ओके सर समझ में आ गया. Okay, समझ में आ गया. Very good. So एक स्टेप का था, अगर हम यहाँ पे करें तो इसको सॉल्व करने जाएं तो पहला लाइन हमें लिखना होगा वी नो एस ई इज इक्वल टू 5 v cos course by 5 cos latitude since it is on equator, तो वहां पे वैल्यू करके यही निकालेंगे v cos course is equal to 10 pi और दूसरा लाइन लिखेंगे. ये हो गया आंसर. मोस्ट लाइकली 25 नंबर मिल गया आपको बस इस 4 लाइन में लिखने में. बस इतने में. और क्या सर डिराइव नहीं करेंगे. ना, डेरिवेशन आपको समझाने के लिए है. डेरिवेशन अलग से पूछेंगे सर लेकिन इतना देखो, इजी तो नहीं आएगा ना सर. अभी जैसे आपको पहला क्वेश्चन क्या लिखा था कि शिप सेलिंग ऑन सो एंड सो लैटिट्यूड एट सो एंड सो स्पीड एंड कोर्स, व्हाट विल बी द जायरो हेडिंग इफ द जायरो वाज डैम्प्ड इन टिल्ट एंड डैम्प्ड इन अजीमथ. ये भी क्वेश्चन आता है. दो लाइन के वो क्वेश्चन, दो लाइन के ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आता है. और वो क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभार जिसमें आपकी जान निकल जाती है यहां से वहां कैलकुलेट करते हुए. उसमें आधा नेविगेशन, आधा जायरो कंपास, आधा एरर, ये सब करना होगा. तो इट इज जस्ट अबाउट योर लक ऑन दैट पर्टिकुलर डे which question you are getting. So take nothing for granted. It may come this way, that way. Be prepared for it. If it is easy, laugh. If it is difficult question or lengthy question, sweat, but deal with it in either case. Next question. Okay, talking about that, just one second. कहाँ गया रे? Are you seeing this? नीचे में रेड में क्या लिखा हुआ है? नो सर. दिख नहीं रहा है सर, ब्लैंक है. अरे स्लाइड 21 नहीं आया? 22 अभी आया सर, अभी आया. 21. What are you seeing at the bottom right hand? MMD November 2019, August 2017. Yes, this question has been asked in these examinations. So doubts clear कि ऐसा तो नहीं पूछेंगे? Yes sir. Okay, so now we go forward and we write another question. The next question that we were talking about. कहाँ गया? हाँ, ये. Slide 27, question number 5.
Tell me when you are done writing. Done, sir. Done. Okay, since we have 5 minutes, we'll go through the answer. This question also asked in April 2017. So case 1 is from sailing from 60 south to 57 south. In this case, we don't have a given latitude. So initially at 60 south, there will be some kind of error. At 53 south, it will be some other kind of error. So what we do, we take MLAT. In the question, we are given that the course is true north 000. Since we have to calculate the speed, we calculate the distance for 7 degrees of latitude difference, DLAT. That's 420 miles. This distance was done in 21 hours. So of course, we can get the speed of the ship and MLAT, which is 60 plus 53 by 2. So now we have course, we have speed, and we have latitude. For latitude, we have a gyro compass which is damped in tilt. So both DE and SE will be applicable. In the case 1, we had the gyro compass which is damped in tilt. So we are going to deal with both DE and SE. One word answer. DE will be easterly or westerly in this case? सर डैम्ड इन टिल्ट है ना सर, तो ईस्टर्ली होगा नॉर्थर्ली कोर्सेस. पिटाई खाओगे. साउथ लैटिट्यूड वेस्टर्ली एरर. सॉरी साउथ है, शिट. साउथ और वेस्टर्ली होगा. तो वेस्टर्ली एरर DE. सॉरी, वो पिटाई वाला बात प्यार से बोला है. नहीं सर ठीक है, मैं उसको ध्यान नहीं दिया, मुझे नॉर्थ है वो. भाई इसीलिए मैंने पूछा ना कि ध्यान में है या नहीं. इसी के लिए मैंने स्पेसिफिकली पूछा कि इज इट प्लेइंग इन योर माइंड और नॉट. आई वांटेड टू सेंड दिस आइडिया होम, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड द क्वेश्चन. नाउ दैट एक झटका लगा अभी, तो अगली बार के लिए हो सकता है थोड़ा सिचुएशन ठीक हो जाएगी आपके लिए. आप ध्यान में रखोगे. So see if you are happy with this. Sin DE is equal to K tan MLAT. And we calculate the value. At the bottom clearly written, since it is in southern hemisphere, the error is going to be westerly or high, 2.16 degrees. Northerly southerly course is about steaming error. Which latitude you are in is to deal with damping error or latitude error. South में west, north में east.
Now, since the course is 000, when she is doing this steaming, when she is steaming from 60 south to 57 south, she is going due north. So the steaming error will be easterly or westerly? सर वो तो नॉर्थ में जा रहा है ना सर? Yes. ईस्टर्ली। आप लोग सब पिटाई खाएंगे। सर यहां इसमें से है नॉर्थ जा रहा है, तो किस तरफ को जाएगा ये? वेस्टर्ली। फिर वेस्टर्ली आएगा। 50 दफा हमने बात कर लिया, फिर से वही मिस्टेक। On all northerly courses, the error is going to be westerly. On all the southerly courses, the error is going to be easterly. If you have any confusion, always make this diagram. साइड में, कोने में, कहीं रफ साइड में अगर डिफिकल्टी है समझने में, तो make always this diagram. 900 cos lat, anything north, resultant error will be westerly, perpendicular to the resultant R. Anything southerly course, resultant is Easterly. here, error will be easterly. Always make this diagram before you say something, till you are totally confident and totally out of any doubt. So are you finished up to this? 2.16 degrees west high, because we are in southern hemisphere. Yes sir. Similarly, for steaming error, we apply the formula and we take out the value of SE, which is 2.3 degrees west, again since course is northerly. So there are two wests. DE is also west, SE also west. Both will be added to true heading, true course, which is 000. So 000 plus 2.16 degrees of DE and 2.3 degrees west of SE. Gyro course 004.46 degrees. Error west, gyro best. Yes. सर थोड़ा सा जैसे अभी क्वेश्चंस कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, ऐसा नहीं है कि पता नहीं हो। Very good. No issue. All understood. Well taken. Point well taken. It comes with practice only. इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, थोड़ा बहुत इधर उधर होता रहता है, बट एज यू प्रैक्टिस मोर एंड मोर इट विल बी फर्म फिक्स्ड एकदम, कोई इशू नहीं है. इट्स ऑल राइट इफ यू आर मेकिंग अ मिस्टेक. मेरा थोड़ा सा तेज बोलना धर्म बनता है एज ए टीचर, तो मैं बोल रहा हूं. नो हार्ड फीलिंग्स एंड नो पुटिंग यू डाउन, नॉट एट ऑल. Mistakes are always welcome. That makes you better. I know you have understood the concept. So on the similar lines, can we do it for also the gyro compass damped in azimuth on the return passage? That means from 57 south to 60. This time the course will become 180 degrees. 5 मिनट ये करके उसका आंसर बताते हैं मैच कर.
ओके, वैसे टाइम ओवर हो चुका है तो आप घर में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं. यू कैन टेक अ ब्रेक. ओके सिर्फ सर. मुझको बता दीजिए इस केस में, सेकंड केस में, व्हेन डैम्प्ड इन azimuth, damping error will be easterly or westerly. Now southerly course. डैम्पिंग One एरर है ना सर. डैम्प्ड इन अजीमुथ अभी सर वो अभी भी सदर्ली हेमिस्फीयर में ही है ना सर. हाँ है. हाँ तो तो सर जो वेस्टर्ली ग्राफ जो रहता है वेस्टर्ली होगा सर. ओके, वेरी गुड. अब फिर से कान पकड़ लीजिए आप लोग अपना. So damping error 0 सर रहेगा. को सब लोग कान पकड़िए अपना, जो जो बोल रहे हैं. डैम्प्ड इन Easterly azimuth, damping error 0. हाँ सर. डैम्प्ड इन अजीमुथ, सॉरी. डैम्पिंग एरर 0. इसीलिए कान पकड़वाया ना आपको. बस टिल्ट होगा सर. एरर नहीं होगा. टिल्ट होगा, एरर नहीं होगा. इसलिए वी कैन राइट वन लाइन, सिंस डैम्प्ड इन azimuth डी इज 0. अब अगले कोर्स के लिए 180 की कोर्स के लिए अपना फिर से स्पीड निकालिए. हाँ, Because सर, time taken is different. This time distance is still same, but time taken is 15 hours only, so speed is high, 28 knots. mlat is same. और एक लाइन हम लिखेंगे कि since gyro is damped in azimuth, damping error is 0. फिर ऐसे निकालिए, अप्लाई कर दीजिए. Since it is southerly course, so the streaming error will be easterly or westerly. Before speaking, make the diagram. Southerly course 180 now. कोने में कहीं पे डायग्राम छोटा सा बनाइए फटाफट अपने आप को बात करने के लिए. ईस्टर्ली सर. वेरी गुड. ईस्टर्ली. सिंस कोर्स इज सदर्ली, error, streaming error will be easterly. Again, since the course is easterly, the error will be resultant to perpendicular, so it will be easterly. Good. So with this we take a break, and when we come back again in the next week classes, we take it forward. सर बस आज 2 ही क्लास है सर. आज 2 ही क्लास है. आई वाज कंफ्यूज कि 4 क्लास है, बट 2 वही क्लास सर. है मेरी. हाँ सर. और अगली 2 क्लास इज